and it is a online voting system that is developed using Java Swing and MySQL database. It is a digital ballot box project is removing the problems like tampering of manual paper ballots, like and booth capturing like problems. Hello everyone. I would like to introduce problems in our existing voting system. Like paper ballots are time consuming and labor intensive, and there can be a human error while counting the votes, and storing paper ballots can tamper the data and votes. And for the above existing problems, we would like to propose solution, which is a digital ballot box. In this, we will have a login page while for the user and for the admin and voter. While admin can manage elections, manage candidates, manage voters, and declare the result. While voter can only vote vote for his favorite candidates on the scheduled date. In our project, we are use Java Swing library as a graphical user interface and Java development kit JDK 19 for Java programming, and we are also use MySQL for data storage, which is hosted on AWS cloud, and we are use JDBC driver to connect database to applications, and we are on Apache NetBeans IDE 18 for debugging, coding and management of project. This is the data flow diagram of our project, where main components are manage candidate, result, manage voters, manage elections, and voter module. And there are two actors like admin and voter. The, this diagram shows the data flow between the different components of the project. We are using two-tier architecture in this project, with and in tier 1 there is user interface, and in tier 2 there is database, which is connected to both the tier are connected through JDBC. In database, we have three tables: candidate table, election table, and voter tables. In election, we have election ID, election title, and election date. In candidate, we have candidate ID, candidate name, candidate gender, candidate photo, and candidate election, which is a specific election for the candidate, and candidate age and vote count. In voter table, we have voter ID, voter name, voter gender, voter age, voter password, voter election, and voter username and vote. These are some screenshots of our projects. This is loading screen. This is admin dashboard. This is login page. This is the manage candidate module. This is schedule election module. This is voting result module. This is manage voter module, and this is voting dashboard where we can vote. In future, we can enhance our security, like we are use OTP systems and multi-factor authentications, and we are also use data encryptions. In future, we can also develop mobile applications for increase the usability of our applications, and we are adopt the systems for different languages and regions for
increase the usability of globally, and we can develop advanced result presentations features for a more instant analysis. In conclusion, digital ballot box project is a आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे ट्रेनिंग होगी और उसी फील्ड में वो लोग अपने आप लगा देंगे। ठीक है ना? तो सर से हम नाम ले लेंगे, जो बच्चे होंगे जो जाना चाहेंगे उसमें तो उनके नाम ले लेंगे। तो आप लोग एमएसएमई में हमें बता रहा था, वो बच्चे जाए, गवर्नमेंट आपको 15 लाख तक की फंडिंग देती है आपके आइडिया पर। अगर आइडिया आपने डेवलप कर लिया तो 1 करोड़ रुपए देती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर प्रोडक्ट भी आपने बना लिया तो आपको 100 करोड़ रुपए तक का लोन देती है। कॉलेज आपको ऑफिस देता है कि अपनी कंपनी चला सके। तो आप लोग इस फंडिंग की तरफ जाइए। ठीक है ना? जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाहते हैं वो एचओडी के थ्रू मुझसे मिल जरूर लें, जिससे कि हम उनकी कुछ ना कुछ शुरू करा दें। जब आपका शुरू होगा तो ठीक है, अब गवर्नमेंट के लिस्ट पर आप लोग काम कर सकते हैं, मतलब फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है। अगर आपकी कंपनी फेल हुई तो आपका खर्चा नहीं गया, वो गवर्नमेंट का पैसा गया। ठीक है, आप फिर अपने वापस आ जाइए। तो ये एमएसएमई का है हमारे पास। उन्नत भारत अभियान के हम लोग, उन्नत भारत अभियान है आईआईटी दिल्ली से और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिनिस्ट्री से। उसमें आप लोग थोड़ा कम है फंडिंग, 1 लाख तक की फंडिंग के और 50,000 तक की फंडिंग के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई गांव बेस्ड आइडिया है, गांव को कैसे डेवलप। Today I am presenting you a project based on laser home security system. Making of our project helped us Seema ma'am and our faculty members. So today is due to lack of time, so we will submit it. It's actually based on a laser home security system. So nowadays we know that thieves and criminals are also upgraded, and technology has gone so far. So we have just worked on a laser home security system that we can use in our homes, offices, or wherever our private premises. So it actually works on just a laser, and we have a buzzer, and we have a input source. So it's a small project, so we have taken a 9-volt battery, and we have a buzzer with a LDR sensor that senses the light. So the working is that this is our area, and we have placed 3 mirrors on 3 ends, and to reflect the rays coming out from the laser light. And basically the working principle is that when we operate it, so let me show you. So when the laser is placed, actually due to transporting the angle has been misplaced, so it's not coming. Otherwise the rays will come here, and it will reflect automatically here, and then from there it will come to this part, and it will reflect to the LDR sensor present over there. So if any foundations comes in between the laser light that has made a complete path, so the alarm will ring. So that's the basic motto of our project. But due to some misplacement of the angles, mirrors, the laser ray is not coming here. Yes. Laser light. सुमित थोड़ा शिफ्ट करके देख लो। ये भी चेक करना। नहीं ऊपर से लेना। उस पे नहीं जा रही है। देखना, इस पे देखना, उस पे कोई बात नहीं, it's okay. So you have to mount it accordingly. Yes, ma'am. Because it's not the permanent, it's all based on a flexible prototype. It's okay. So it's Next. Good morning and good morning, sir. Today we present more on Tesla coil. Tesla coil is to provide wireless electricity. so actually we have seen nowadays the phones are coming wirelessly, and
and many people just think that how is it possible. So it's just a way to demonstrate and a way to pass electricity without touching any conductor. It works on it. So you can see that without touching any conductor, the light is glowing. How much coil it is needed? Ma'am, actually we have to create a huge amount of resistance. So we have to wind many turns. Number of turns will create more voltage. That's why I'm asking how many number of turns are required for particular Ma'am, थोड़ा actually, वॉट रेटिंग और yes, नंबर ma'am. ऑफ टर्न्स अभी बता सकते हो? Yes, ma'am. Actually, the prototype which we have made, so it's not made for this light. The light which we have made for it basically, so transporting it has broken up. It was a LED. that was the Yes, ma'am. It's what a LED. So it's actually of a higher capacity, so it's not glowing fully. Yes, ma'am. And if we increase the number of turns or take it longer, then it will be capable of glowing. how much time it will be having the charge in this, to how much the total time it will be saved in this particular use, right? Not same. It has to be near only. It's just a flow of current. To make it, it's like a little disadvantage of this. You have to make it like charge ही रहे जब तक उसके पास है तब तक पूरा चार्ज रहेगा. Yes, ma'am. Actually, the light which we have made. Based on SyncSpeed.com server. The Wi-Fi is connected with the both laptop and Wi-Fi board. Without going to the field, We can collect the level of amount of moisture. irrigate that is automatically irrigated. It is going to help farmers. पर्सनली नहीं जाके बार बार चेक करना पड़ेगा. We can दूर से ही पता कर सकते हैं कि क्या वो मॉइस्चर है we can उसमें. place it at different distance लोकेशंस है ना, डिफरेंट लोकेशंस पे रख के टेस्ट और करेंगे. चेक कर सकते हैं कि मॉइस्चर कितना. तो अगर एक्चुअल में भी 1 एकड़ लैंड के लिए बनाना है तो क्या कॉस्ट रहेगी आपका प्रोजेक्ट? हम ये जरूर पता होना चाहिए कि वायबिलिटी क्या, इकोनॉमिक्स सबसे पहले आता है किसी भी प्रोजेक्ट में. मतलब आइडिया इज गुड, आइडिया तो होना चाहिए, फिर साथ साथ इकोनॉमिक्स ऑल्सो हैज टू बी वर्कड अपॉन, क्योंकि अगर कोई खरीदेगा नहीं तो फिर वो भी तो बात है ना. टोटल थोड़ा एस्टिमेट कॉस्ट फॉर 1 एकड़ लैंड ओनली अप्रोक्सीमेटली. एक का मैम एक पूरे सेट को बनाने में अराउंड लगा है 400 रुपीज. अच्छा. And if we place around, it will to cover, it will take around ma'am 10,000 to cover 1 1 एकड़ लेंगे. will at 100 meter. सेंसर्स विल वर्क यू नो Sensor- फॉरएवर Yes, 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 ma'am. बस मशीनरी वर्क को सही से रखना है. उसमें SyncSpeed.com में जितने भी आपके सेंसर से कनेक्ट होकर उतने से फील्ड दिखाते जाएंगे. आप one field to अच्छा ठीक है. ओके, तो हाउ विल द फार्मर गेट टू नो कि सॉइल का लेवल क्या है? तो वो सॉफ्टवेयर उसको नॉलेज होनी चाहिए या मोबाइल पे कोई ऐप नहीं मैम, जैसे कैसे क्या आएगा? कर सकते हैं हम लोग, इसका ऐप भी बना सकते हैं कि जिसमें हमें तो शो आपने क्या प्लान किया है? मतलब तभी एग्जीक्यूशन लेवल पे आएगा. इसमें ये प्लान कर रहे हैं कि एक लाइट वेबसाइट बनाने का, या जो वो सिर्फ कोड के रखे उसमें मॉनिटर हो कि इसमें कितना वाटर लेवल है, कितना बट दिस इज moisture. जस्ट माय एडवाइस कि इस पे भी काम कर लोगे तो एक कंप्लीट और प्रोजेक्ट हो मैम जाएगा. जैसे हम लोग It's a और good थोड़ा idea. इन्हेंस करना चाहते हैं, लाइक जैसे कि इसमें किस चीज़ की कमी है, इसका लेवल क्या हाँ, है. ये कॉम्पिटिशन्स का मतलब ये नहीं है कि आपको हम रियली जज कर रहे हैं. जस्ट यू नो ट्राइंग टू टेल यू कि ये और कर लोगे तो ये ऐड ऑन करके ही आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हो. फिर जाओ IITs पार्टिसिपेट करो, है ना, वी आर वर्किंग. एंड यू गेट जॉब्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट वर्क मेनली. ये भी बता रहे हो. बेटा आप गुड वर्क करो. मैम सो करते हैं. नहीं ठीक है, मैम नोज एवरीथिंग, तो इट्स online grocery delivery system. We all see there are many grocery system in the market right now, but they all for example, Blinkit is one of the most popular example of the grocery delivery system. But Blinkit is its own company. It does not provide to facilities of ad shop, but in our application we provide the facilities of adding shops and increase their demand, increase their supplies or business. कोई आपका ब्लॉक डायग्राम है, Yes. एक्सप्लेन कर रही और सिस्टम
our courses. What courses we are offering at our college. Next is enquiry page. If a new student or a parent So basically the home page is a landing page for both the normal user and the administration. So you can, there is no password required for normal home page. Anyone can access it. And then if you are an admin, you can log in, so there you require a traditional for login as an admin. So admin can work as an admin portal, then when you will log in, then it will come to admin portal, in which only admin can access and work perform. So the work we can do is like search student, modify student, add student and view student report. And all these are in a database table, student table. So everything you will do, it will reflect in student table. And then if you are normal user. So the admin login page. Login page. So it is a login page. Home page. So it is basically a home page which can both can access an admin and the normal user. But if you are an admin, you will do a login. Okay, next. Next आप बताइए यहाँ स्टॉक में ना If you are normal user, then you can access only these areas, which is you can view a alumni and you can view a courses, and then about us, and you can basically see the details of the organization. So this is an inquiry which student can fill a form and it will directly contact the administration. In this test, we will use ultrasonic sensor to detect presence of object using Arduino and servo motors. When we place an object near to a sensor, it will sense the object and open the lid. तो इसमें वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, हमने इनको भी सबको एडवाइस किया गया था कि कुछ ऐसा भी बनाओ क्योंकि अब वेस्ट को कॉमनली नहीं डालना है। तो वो क्या सेंसर कुछ ऐसा भी हो सकता है थोड़ा मॉइस्चर इनको तो ये भी बताया था वॉइस लगा दो कि जो फेंक रहा है कूड़ा उसको पता चले कि मेरे को वॉइस मिल रही है। वेट वेस्ट है तो यही वाला खुलेगा, दूसरे वाला खुलेगा तो वो ड्राई वेस्ट है। वॉइस कुछ एक थोड़ा वॉइस कंट्रोल बेस्ड बनाना पड़ेगा। उसमें सेंसर भी लगा। हाँ, क्योंकि अब एक डस्टबिन नहीं होता है, एनीवेयर यू गो दो वेस्ट, और हॉस्पिटल्स वगैरह में तो बायो वेस्ट एक तीसरा हो जाता है। थोड़ा सब इनको भी बताया कि थोड़ा और मॉडरेट करो इस चीज को, ठीक है? गुड, यू आर वर्किंग ऑन इट। आप भी सोचना, आइडिया है तो मिलके कर लेना, ठीक है? ये भी करेंगे। क्लास है ना, हिंदी में बोलो, नो प्रॉब्लम, जस्ट एक्सप्लेन इट वेल। ये स्मार्ट डस्टबिन है जिसमें हम बिना छुए कचरा इसमें डाल सकते हैं। इसमें IoT सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर, स्विच, LED, जंपल वायर Actually, ma'am, this is just automatic opening can. It works on its principle. तो आप आए क्यों नहीं? The sensor will be collecting the moisture in the water. Online grocery delivery system. We all see there are many grocery systems in the market right now, but they all for example, Blinkit is one of the most popular example of the grocery delivery system. But Blinkit is its own company. It does not provide to facilities of add shop, but in our application we provide the facilities of adding shops and increase their demand, increase their supplies or business. कोई आपका ब्लॉक डायग्राम है, Yes. एक्सप्लेन करें योर सिस्टम।